ये दवाई ये दोबारा ये 3 दिन ही खानी है, इसका पत्ता कट नहीं है इसलिए गेट लगा देगा। दोनों 3 दिन ही खानी है, 3 दिन का ये और थोड़ा नहीं। गेट लगा देगा पूरा 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 गेट लगा देगा। पूरा गेट अभी कर तो रहे हो, सफाई होगी। आंटी को बोल देना आ जाएंगी, जब आएंगे तो चुप बंद हो जाएंगे। माइक टेस्ट।
Hi, good morning, guys. Welcome to our live stream of the initial analysis before the market opens. So first of all, we will try to identify what the market is trying to do on a bigger time frame, and then eventually we will come down. We'll start with Nifty. So Nifty में basically क्या हो रहा है? I'll try to use both English and Hindi because that is how our subscriber base is. So Nifty में starting from March we have been seeing this uprise for 4 continuous months, and then back in July and August we saw that the markets moved down. In September we saw a good up move, but eventually in last 10 to 11 days we saw that markets again saw profit booking from the older levels. And the October series, considering that it is festival season as well, it started off with a banger for now, at least for the 4 or 5 sessions that we have seen so far in this series. So as far as October series or anything from a monthly point of view is concerned, I think the trend is towards the upside, so we should be fine there. However, the only thing is that the highs that we have seen was a lower high in comparison. Coming to the daily or maybe weekly time frame first, on weekly it's like a congestion zone where we are. काफ़ी टाइम से निफ्टी यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है. आई थिंक आपने देखा होगा कि जुलाई में भी यहीं था बैक इन 2024. फिर उसके बाद यहाँ इस मूव में दिसंबर में इसने ट्राई किया था वापस आने का, बट इट कुड नॉट सक्सीड. Then thereafter the entire May and June was into this 25,000 sort of a zone. उसके ऊपर एक breakout आया, and then eventually we are just into this congestion zone again. So nothing specific from the weekly. However, like monthly, the trend is on the upside. ऑन टू द डेली चार्ट. डेली चार्ट में एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि जो हम अक्टूबर सीरीज़ की स्टार्ट करी थी वहाँ से हम एक 4 सेशन के अप मूव में थे, लेकिन कल के सेशन में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली. हाउएवर ट्यूसडे के सेशन में भी जो कैंडल है वो बहुत ही पॉजिटिव तो नहीं है, तो उस पर्सपेक्टिव से हमें मार्केट को देखना पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों कैंडल बियरिश टाइप की हैं, बिकॉज इसमें विक ऊपर की साइड है और काफ़ी बढ़िया. दैट मीन्स सेलर्स वर इन एडवांटेज ऑन दीज. ओके, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो हमारा 18 सितंबर का टॉप था, वहाँ का एंकर्ड वीवैप इज़ अराउंड 24,950 लेवल्स. सेम जून के लेवल से भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहा है. तो अभी हम आज ना एक चीज़ चेंज करेंगे कि एक जो यहाँ पे डाउन से जो हमारा वो है ना एंकर्ड वीवैप, वो और लगाएंगे 30 तारीख से. ओके, तो इसको एक बार हम सेटिंग को चेंज कर लेते हैं. आई थिंक जो हमारा ये 21 अगस्त वाला है ना, उसकी अब कोई इतनी वैल्यू नहीं है, तो 21 अगस्त की जगह हम 30 सितंबर को 9:15 हाँ इस वीवैप को हम मूव करेंगे, सेटिंग्स को सेव करेंगे. तो अब हमें ये भी पता चलेगा कि जब हमने यहाँ से अप मूव स्टार्ट किया तो इसका एंकर्ड वीवैप कहाँ पे आ रहा है. तो एंकर्ड वीवैप इंडेक्स लेवल पे 915 के आसपास है. तो आप ये देखोगे कि ये तीनों जोन्स जो है ना, यहीं पे कहीं आपका एक सपोर्ट आ रहा है, या फिर एक जो वो जोन थी इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे हो सकता है मार्केट आके थोड़ा सा एक अटेम्प्ट ले. ठीक है, आई थिंक 15 मिनट के लेवल पे जाते हैं और देखते हैं एक बार कि कल के सेशन में क्या हुआ. कल काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था. आई विल टेल यू व्हाई. सो इफ़ यू आर आवर सब्सक्राइबर यू माइट बी अवेयर दैट on the closing session of 7th, due to this candle the trend got changed. We were into the short side. इसमें फर्स्ट 15 मिनट्स में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, जो कि हमने एक्सेप्ट किया. इसमें हमें छोटा सा एक लॉस हुआ. फिर उसके बाद ये अप मूव में हम जैसे ही आए, हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस जब इनिशिएट करी, तो इमीडिएटली हमारा MTM लॉसेस स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे आके हमारा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया. तो कंसेक्यूटिवली हमें 2 लॉसेस हुए. उसके बाद हमने पोजीशन स्विच करी. यहाँ पे हमने शॉर्ट मूव में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था. इनफैक्ट ये जो पूरा यहाँ का MTM लॉसेस था ना, वो यहाँ पे रिकवर हो गया था. हाउएवर मार्केट हैज़ इट्स ओन आइडिया ऑफ हाउ टू वर्क. तो यहाँ पे उन्होंने
मार्केट को ऊपर लेके गए प्लेयर्स, और यहाँ पे अगेन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट ओवरऑल इस पोजीशन में हम एक छोटा प्रॉफिट लेके निकले थे बिकॉज हमारी एंट्री यहीं कहीं हो गई थी, थोड़ा बहुत हमने नीचे के लेवल्स पे बुक भी किया था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फिर से अगेन लॉन्ग्स की पोजीशन में आए। लॉन्ग की पोजीशन में आने के बाद हम ऊपर जाते रहे, हमारा प्रॉफिट अगेन होता रहा। एक पॉइंट ऐसा आया था यहाँ पे कि हम ओवरऑल पॉजिटिव हो गए थे इन टर्म्स ऑफ M2M, हाउएवर अगेन मार्केट रिवर्स्ड, और यहाँ पे हम फिर से इस पोजीशन को वेरी मिनिमल प्रॉफिट के साथ बुक कर पाए बिकॉज हमने थोड़ी पोजीशन यहाँ बुक कर ली थी। हाउएवर ये नेट ज़ीरो ही मानना बिकॉज ब्रोकरेज लेवल पे था, और इसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस लेके गए हैं। सो एज वी स्पीक आवर स्टैंड्स ऑन द मार्केट इज़ ऑन नेगेटिव साइड टू लिटिल बिट ऑफ न्यूट्रल एज वेल बिकॉज ट्रेंड अभी बहुत क्लियर नहीं है, ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। हाउएवर एक चीज़ बहुत क्लियर है, लोअर हाइज लोअर लोज बनना शुरू हो गया है। 3 लोअर हाई 3 लोअर लो बन चुके हैं, क्या एक और लोअर लो आएगा वो एक बार देखना पड़ेगा, और लोअर लो आएगा तो 25,000 के नीचे जाने पे ही आएगा। तो ये हमारा इस सेशन के लिए पर्सपेक्टिव है। एज वी स्पीक गिफ्ट निफ्टी इज़ अराउंड 143 ऑड लेवल्स, मतलब यहाँ से करीब 46 पे क्लोज हुआ था मार्केट, तो हो सकता है 60-70। तो वही है कि अगर ये इस जोन में आएगा ना 25,080, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट पोजीशन वेयर इफ़ समबडी इज़ लुकिंग टू इनिशिएट न्यू शॉट्स, दैट इज़ द बेस्ट वे बिकॉज यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट निफ्टी। एक बार बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम है, इट वाज इन अ कंटिन्यूअस अप ट्रेंड, इवेंचुअली यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ 15 मिनट्स पे, और उसके बाद काफ़ी अच्छा डाउन मूव दिखा। फिर उसके बाद इसने ट्रेंड को चेंज करके पॉजिटिव जाने की ट्राई करी, लेकिन ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल्स वी गॉट द एग्जिट, एंड देन इवेंचुअली शॉर्ट पोजीशंस हमारी यहाँ पे कैरी हुई। इंटरेस्टिंगली एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको एक बार आज ट्विटर ओपन करके। सो इफ़ इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग अस ऑन ट्विटर, गिव मी सेकंड गाइस, I'll just log in into Twitter and then we'll resume the session. लॉगिन हो गया, एक बार मैं वापस आ जाता हूँ। हाँ, सो ऑन द ट्विटर इफ़ यू वुड हैव सीन आवर ट्वीट yesterday, this is what we were talking about. So at around 3 o'clock we saw that post 3 p.m. a little bit of activity on the negative position side had increased. I did not tell you, I just said decent activity because कभी कभी थोड़ा इन्फ्लुएंस या बायस हो जाता है, कोई शॉर्ट पोजीशंस ले जाते हैं। मार्केट अगर कहीं दूसरी साइड में खुल जाए तो फिर वो ट्रोलिंग वगैरह होती है, तो उससे बेटर है कि मार्केट 3:30 के बाद, तो 3:31 पे आई जस्ट पोस्टेड दिस। तो अगर आप देखोगे ना तो ये अराउंड 3 o'clock है, ये 255 का कैंडल है, तो लेफ़्ट साइड पे ना सेलर्स हैं और राइट साइड पे बायर्स हैं। अब आप सोचोगे कि सेलर्स बायर्स तो सेम होते हैं तभी तो मार्केट में ट्रेडिंग होती है। सो दीज आर दी मार्केट ऑर्डर्स, these are not the limit orders because market orders are considered to be little more influential than the limit orders, considering they can move the price much more than the limit orders can. तो यहाँ पे आप देखोगे ना कंटिन्यूसली यहाँ पे जो रेड रेड्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे सेलिंग हो रही है, सेलिंग 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 सेलिंग। यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग हुई, बाइंग 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 यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आके नीचे और सेलिंग होती रही, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। तो ये इन जनरली हम सोचते हैं कि ये देखो 253, 239, 138, 112, 390, 362, तो ये इनके स्टॉप लॉसेस हो गए। तो ये वाला बायर तो यहाँ पे एग्जिट हो गया। इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट्स भी इनिशिएट हुए अराउंड द सेम लेवल जब ये आया। तो यहाँ पे आप देखोगे ना काफ़ी अच्छा डिसेंट 542 का शॉर्ट था, यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग भी आई होगी, तो बट यहाँ पे 1000-1200 कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट है। तो इसके बाद ये मार्केट को और नीचे लेके गए, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है इस बायर की एक प्रॉफिट बुकिंग हो, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 3 बजे के बाद थोड़ी decent selling हुई है। So based on this, what our expectation is for the current session,
कि मार्केट ना कहीं पे ओपन होने के बाद शायद एक छोटा सा बाउंस देगा, हो सकता है इस लेवल तक जाए, हो सकता है स्टॉप लॉस भी ट्रिगर कर दे। वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू टेक इफ दैट हैपेंस। और ये होने के बाद फिर हम एक बार अपना व्यू चेंज कर लेंगे अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो बेसिकली द इंटेंट इज अगर यहाँ पे कहीं पे होगा तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट फॉर रिस्क टू रिवॉर्ड, कि यहाँ पे हमको अगर कुछ भी पोजीशन इनिशिएट करनी हो तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट कुछ ऐसे खुल के थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से नीचे आना चाहिए। बट नाउ दैट वी हैव सीन दिस zigzag, आई एम pretty sure and my confidence is little on the higher side कि ये नीचे जाने के लिए रेडी है, दो we would accept anything that the market will do. We do not have any bias, we will continue to trade as the market gives us the signal. तो निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे हम ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली लेंगे। एक बार पोजीशंस और देख लेते हैं कि पोजीशंस कैसी बन रही हैं मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ इस पर्सपेक्टिव से अपने को देखना है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे अक्टूबर सेशन ऊपर 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 ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। तो कल के सेशन की अगर आप पर्सपेक्टिव देखोगे ना तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखी है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग मीन्स द ट्रेंड इज़ चेंजिंग ग्रेजुअली। तो एक बार इस पर्सपेक्टिव को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में बहुत ही मिनिस्कुल ओपन इंटरेस्ट था, उसके साथ मार्केट यहाँ पे बड़ा एंड ग्रेजुअली कल जो हम ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग छोटा सा शॉर्ट बिल्डअप भी है बैंक निफ्टी में। हाउएवर टू अर्ली टू से बिकॉज दीज डेज बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा कोई पोजीशन बनती नहीं है। एक बार बिल्डअप देख लेते हैं, फ्यूचर बिल्डअप, कि हमें क्या दिख रहा है, कहीं पे कुछ सिग्निफिकेंट लॉन्ग्स दिख रहे हैं क्या। तो सिग्निफिकेंट लॉन्ग्स में कल जो हमें दिखा वो छोटा सा आइनॉक्स विंड में दिखा, बट आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ मेंशनिंग बिकॉज 3% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज ओनली। केन्स टेक्नोलॉजी कल काफ़ी डाउन था, हाउएवर ओपन इंटरेस्ट उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है जितना प्राइस डिक्रीज़ हो गया है। तो उस परस्पेक्टिव से आई थिंक यहाँ से कुछ भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लॉन्ग नहीं है एक्सेप्ट फॉर SBI कार्ड्स। तो SBI कार्ड्स पे इफ़ यू हैव बीन फॉलोइंग अस, तो SBI कार्ड्स पे हमने बोला भी था कि बाय ऑन टिप्स हो गया ये। तो जैसे ही यहाँ पे इस कंसेशन जोन के आसपास अगर वापस आए ना, दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब लिटिल बिट ऑफ SBI कार्ड्स एज वेल। तो SBI कार्ड्स इज बाय ऑन टिप। हाउएवर मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स नहीं दिख रहे हैं। एक बार शॉर्ट साइड पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो देखो आप शॉर्ट में तो कल काफ़ी ज़्यादा एक्शन था। तो अगर आप देखोगे तो सुजलॉन एज वी स्पीक, when I posted this video over the weekend stating that Suzlon is weak, there were a lot of people who were saying no it is not and blah 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 blah, but this is where we are कंटिन्यूसली। ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। ये अब एक छोटे से सपोर्ट जोन के आसपास आया है, बट आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रीज़न वाई यू शुड बी लॉन्ग सुजलॉन एट दिस लेवल इज़ नॉट शॉर्ट। तो सुजलॉन पे हमारा व्यू नेगेटिव है। पीएफसी पे भी थोड़ा सा नेगेटिव सा ट्रेंड बनना शुरू हो गया है। हाउएवर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो ये एक कंजेशन जोन है। तो 400 के आसपास वैसे भी पीएफसी आपको पता है कि काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुका है, अराउंड 1 साल से 400 के लेवल पे ही है। तो यहाँ पे ये उतना बड़ा शॉर्ट नहीं है जितना लेट्स से सुजलॉन है। एक बार और देख लेते हैं बाकी कोई और ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे। आरवीएनएल, हाँ आरवीएनएल भी हमने आई थिंक कल शेयर किया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन ट्विटर कि आरवीएनएल और आई थिंक एक और आईआरएफसी और आरवीएनएल। तो आरवीएनएल आई थिंक थोड़ा सा इसमें नेगेटिव ट्रैक्शन बन रहा है बिकॉज आप देखोगे तो ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न टाइप का कुछ एक पोजीशन इनिशिएट हुआ है यहाँ पे। हाउएवर आरवीएनएल इज़ फाइन, इतना ज़्यादा वो नहीं है। आईआरएफसी देख लेते हैं एक बार। हाँ आईआरएफसी में थोड़ा सा ये देखो आप, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना
तो ये नीचे 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 आ रहा था, इनफैक्ट ये तो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है। अब आप देखो, नीचे आया बड़ी कैंडल, ऊपर आया छोटी कैंडल, नीचे आया बड़ी कैंडल, ऊपर आया छोटी। तो इसका मतलब धीरे 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 करके इसमें कोई शॉर्ट पोजीशंस बना रहा है। तो IRFC पे हमारा व्यू बहुत क्लियर है। IRFC 129 के जितना आसपास आपको मिले उतना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में हो जाएगा। बट IRFC should be looked from a shorting candidate than longs. If you're not somebody who shorts the market, potentially what you should do is you should not have at least long positions for now in IRFC. तो IRFC मुझे वीक लग रहा है इन लेवल्स पे। या सो दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ लुकिंग। निफ्टी like GIFT Nifty is giving us little bit of positive stance, stating that it is going to be a little bit of gap of around 28-30 points for now. We will see whether this gap is able to sustain when the market opens or not. That will be interesting to watch. In case if you have any questions, guys, to utilize the chat section, we will be more than happy to answer any queries that you have. We'll see the gold as well. So gold has been into a fierce rally. I'll wait for a hangman sort of a pattern before I could even think of doing shorts. We were planning to do some shorts here, but eventually the stop loss got triggered. तो यहाँ पे 3900 3850 was our expectation कि यहाँ से शायद ये रिवर्स हो जाए, but then it is into a fierce mode right now as we speak. I don't think we should try to do a reversal at this point of time. In case if the market has some perspective of gold reversing, तो एक आध % नीचे जाके एक बार देख लेना। बट अभी तो इस लेवल पे कुछ भी ऐसा शॉर्ट जैसा कुछ लग नहीं। सॉरी, एक बार सिल्वर और देख लेते हैं। तो सिल्वर आई थिंक एज फार एज द लेवल्स लुक, तो हमने यहाँ पे एक एनालिसिस करी थी सिल्वर पे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, जब हमने 42-43 का टारगेट दिया था। इनफैक्ट अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखोगे ना, तो सबसे पहली वीडियो जो थी ना हमारी, विच वाज आई थिंक समवेयर लास्ट ईयर, तो इस पे ना सिल्वर पे हमने ये एनालिसिस करी थी हाई लेवल पे कि यहाँ पे इसने इसका एक ब्रेकआउट दिया था, और तब हम कह रहे थे कि यहाँ पे ये 40 ऑड लेवल्स देगा, और ये हमारा एक सक्सेसफुल ट्रेड था। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स who are into bullion trading also reached out to us stating that this was a very successful view that we had. एक बार ना अगर आप 3 months के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो मैं एक व्यू इस पे और दिखाना चाहता हूँ आपको। अब देखो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे एक 1980s का हाई है, वहाँ से ऑलमोस्ट 80% ये रिवर्स हो गया, फिर ये 2011 में सेम आया, यहाँ पे भी ये रिवर्स हो गया, अब ये यहाँ पे करंट लेवल्स पे है। तो अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि ये ब्रेकआउट हो चुका, कुछ लोग बोलेंगे कि अभी ये स्टिल इट इज़ नॉट द ऑल टाइम हाई। हाउएवर there is no reason that you should be short on or even think of short in case of silver. The idea is कि अगर ये यहाँ का breakout देगा ना, तो I'm not saying it is going to continue in the same fashion, but somewhere down the line, maybe 2 to 3 years of time, I'll not be surprised if the silver reaches $100 mark. So this is what our view is on silver. Any correction, any good correction maybe, which will be more like a retracement or I'll give you a level as well. So this is the zone. तो अगर सिल्वर यहाँ पे आके रिट्रेस करके इसको रीटेस्ट करता है ना, इस जोन को 37-34 को, तो शायद ये और बड़ा मूव देगा।
इंस्टेड ऑफ इफ सिल्वर कंटिन्यूज फ्रॉम हियर ओनली. तो सिल्वर अगर कहीं पे भी यहाँ से आपको 20-30% अगर नीचे मिलता है, बिकॉज सिल्वर इज़ नोन फॉर गिविंग बिग मूव्स, स्पेशली वो अगर मूव देता है तो एक एक दिन में भी 10-10% के मूव्स हमने देखे हैं सिल्वर में आते हुए. तो 34-37 पे अगर कभी भी आपको मिलता है तो आपको इसको बाई करना है और फिर लंबे टारगेट्स के लिए करना है. द बेस्ट वे टू डू इट वुड बी maybe in the form of ETFs, or if you can afford it, should be in the case of physical holding as well. This is what we suggest, because let's say if you do it in form of future trading or option trading in MCX, तो options में तो उतनी वॉल्यूम ही नहीं रहती है. But in case if you're doing it from future, the premium that you're giving on every expiry is close to 4-5%. तो आपका जो annual return है ना, तो उसमें से 10-12% तो ये प्रीमियम वैसे ही चला जाता है. Hence, one of the overall returns for somebody who buys silver Bs or any ETFs based on silver are ought to make more returns than the some person who's doing the actual trading on MCX. So this is the view for the day. Gift Nifty continuing at the same level, 25,148. This is what our expectation is, reiterating just in case if you have joined late. We expect that it is going to retrace a bit in case if it's a small gap opening. तो 25, 80, 85 के आसपास काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा ऑन द शॉर्टर साइड, बट आर व्यू रिमेन्स द सेम. रीज़न बीइंग लोअर हाई लोअर लो पैटर्न स्टार्ट हो गया है. हाउएवर अगर मार्केट कल की तरह ऐसा स्टॉप लॉस खेलेगा तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव दैट, बिकॉज वी आर अवेयर if we follow this strategy we have made a lot of money. So let's say आप यहाँ पे देखो 1 तारीख को हमने यहाँ पे जो लॉन्ग इनिशिएट किया था, we were quite successful in this. We got a stop loss triggered here, more than successful here, small stop loss here, successful here, small stop loss, successful, small stop loss, net, and we are into short positions right now. So one disclaimer that whatever we are speaking as part of this live streaming, this is only for educational purpose, guys. We do not recommend any sort of trades based out of this. In case if you want to do trading, please consult your financial advisor. We are not SEBI registered. However, we do have plans for getting a SEBI registration sometime soon, but that will only depend on the kind of traction that we see. We are very new into this field of doing YouTube and live stream. However, we want to do it effectively. We are not doing it just for the sake of having subscribers or anything. We want to do it religiously. We want to do it for the people. Okay, so yeah, we'll take a quick 6 minutes sort of a break, and then we will be back with the pre-market, like pre-open analysis. This is what we had in the pre-market analysis. Okay, thank you.
Okay, so the pre-open market has started. Let us see how the traction is looking like. So M&M happens to be the top gainer in terms of Nifty 50, is showing a increment of around 3.6%. टाटा मोटर्स, तो दोनों ऑटो से एक ऊपर एक नीचे. टाटा मोटर्स 1.23% into the negative. However, we will wait for market to settle. On the Nifty Bank, ICICI Bank is on the positive side, 1385. Canara Bank again continuing on the positive side. I think majorly everything is into positive. Bank Nifty, if but starts at these levels, maybe it will be like a 0.3-0.4% positive start. Let's see. On Nifty, we are looking at a 25,018 sort of a level at this point of time. We'll wait for the markets to settle in another 4 to 5 minutes. However, whatever we were thinking of the opening, I think it is going into the same lines as earlier. $25,051, around a 6-point increment. Around the same levels. GIFT Nifty is showing 25,145. Let's see where the market opens. So today we also have Sensex expiry, right? So we will have to continuously watch the Sensex levels as well. That we will continue. Sorry. $25.60 is the current levels into the pre-open. Let us try to do a refresh. Dr. Reddy is now the top gainer. Then Tata Steel has come up. Eternal, Infi is doing good since last 3-4 sessions. If you are into our subscriber base, you might be aware that there was some long position, very small, that we initiated on Friday, which was around 1443 odd levels, and I think it is doing pretty well in terms of reaching 1500. We are yet to see an announcement on the buyback side as to when the buyback will be announced in terms of the execution date and the record date. So Infi is doing well. HDFC Bank starting on the negative side. Let's see. How's Tech Mahindra doing? That would be good to watch. Let's see the future and options securities as well. So Prestige, Dr. Reddy, IAFL, Oro Pharma, Zydus Life, these are on the positive side. So I think Pharma, considering the tweet that we saw in the Fox News interview from Trump, that the generic medicines, there is no plan of initiating a new tariff on them. So hence the the positives that you're seeing on the pharma sector for today. Concor, pretty weak. It has been into these levels for quite some time now. 25,071 is the current level. We are maybe another minute or so away from the market levels to settle, and then we'll eventually see where the market goes. To reiterate, our stance during the beginning is neutral to negative, because higher high, higher low has started already. The stop loss happens to be around 25,090 levels. If in case it sustains above these levels, we'll be more than happy to change our stance. 25,054 is the current level, almost the same levels where the market
we were expecting to start like 20-25 points up, and then this is what we are expecting. Okay, so thank you everyone for joining the stream. We wish everyone all the best and a very successful trading session ahead. In case if you are a short-term trader, in case if you are a long-term trader or a long-term investor rather, we hope that you find better opportunities into the market today. So this is where the markets has settled in the pre-market session. 25074 is the current level. So 25074, Nifty is showing a positive start of around 28 points. Bank Nifty has chosen to start negative, considering ICICI, Axis and SDFC all three on the negative side. So Bank Nifty is having a negative start of around 39 points. Sensex showing a positive start of around 126 points, around 81,900 odd levels. So this is where the market is opening. In terms of gainers, Prestige, Oro Pharma, Naukri, IFL, Concord. So these are a few stocks which are opening on the positive side. I think pretty much everything is starting neutral to positive here. The lowest, that is Marico with a negative of 0.6%. So what we expect is the market is going to open right at these levels. Around 25074 to 25090 is the levels where I see that the first level of selling should be seen, and then eventually the price should drop. This is what our expectation is. However, if it is going to sustain above our stop loss levels till maybe 930, then we are going to reverse our positions as well. Another 3.5 minutes before the 9:15 session begins, we will try to continue this live stream for maybe an hour or so, just to help understand the mechanism that we follow into the market.
So 25074 is the current level. Gold has started like 500 rupees down. I think in the initial ticket it went until 1,22,000 as well. But as we speak, it is around 400-500 points down in the first tick. Silver, oh, so silver had a bad tick apparently on MCX. It went until 1,44,000. So somebody is selling, it seems. Good volumes as well in the beginning, so there is definitely some sort of trades that has happened at these levels. So we will have to see how a market reacts when it comes back to 1,46,000. Then we will be able to see who got the profit out of these two long wicks on both, so gold and silver. On gold it is fine, on silver it is pretty big in the sense it's like 3.5% of a tick that we have seen. In the crude oil as well, it is on the negative side, nothing big there. Same as the thing that is happening on natural gas as well. So no much major traction. We are just 1 minute away from the actual market start. We will see how the session begins. Back to the Nifty window, because this is the primary index that we share our views on. Where's Nika starting? So if you're not aware, Nika happens to be our stock of the month as well. It has given a pretty decent start. We're expecting Nika to continue to do well in the festive season, considering that this is pre-Diwali sort of a season in India. Especially the festives have already ticked off, especially the likes of Karwa Chauth, etc. Coming up tomorrow. So yeah. Okay, so the live trading has started. 25,082 is the current level where the market has started. First tick is on the upside. We will see how the market reacts on these levels. My expectation was also like this when we were speaking in the pre-market session. हम जब बात कर रहे थे कि ये यहाँ पे कहीं जाएगा और यहाँ से रिजेक्शन लेगा, हम ऐसा सोच के चल रहे हैं मार्केट में. अब वो देखना पड़ेगा कि जो वो लास्ट 30 मिनट्स की हम सेलिंग देख रहे थे वो कंफर्टेबल रहते हैं इन पॉइंट पे या नहीं रहते, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपना स्टांस भी देख लेंगे. 25,074 is the current level. Bank Nifty is negative around 30 points. Nifty is positive, so is Sensex. Nifty is around 25,070 levels. Nothing major in terms of the option data at this point of time because it is just 1 minute. Nifty अब थोड़ा सा नीचे आ रहा है. हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे 25,062. तो अभी हमारी जो इनिशियल एनालिसिस है दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट कि ये यहाँ पे कहीं पे स्टार्ट होगा और फिर इसके बाद नीचे आएगा. 15 points of gain that we see on the index level, a little bit more on the future levels. 25,050 is the current point where the Nifty is. This is what we were expecting as well. तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कहीं ऊपर खुलेगा. 25,080 हमारा स्टॉप लॉस है और वहाँ से ये नीचे आएगा और ये वही एग्जैक्टली करता हुआ दिख रहा है एटलीस्ट फर्स्ट टिक में. वी विल वेट फॉर सम टाइम बिफोर द पोजीशंस आर इनिशिएटेड. अराउंड 25,156 फ्यूचर लेवल्स पे थोड़ा सा अभी हमें ट्रैक्शन देखने को मिला है, एक बड़ी पोजीशन, बट आई थिंक उसने 1-2 पॉइंट के नीचे अपडेट भी कर लिया है. बैंक निफ्टी अराउंड 100 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम वेयर इट ओपनड. 25,060 is the current level. We will
now wait for markets to settle a bit. $25,054 is where the market is right now. 8 points uptick right now on निफ्टी. तो निफ्टी जैसा हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कहीं इन लेवल्स पे जाएगा, फिर वहाँ से एक रिजेक्शन लेगा, तो उस लेवल पे हमारी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट गई है. अभी 25,050 के लेवल पे निफ्टी है. थोड़े टाइम के लिए वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम वॉल्यूम और OI एनालिसिस फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे. तो अभी फर्स्ट अपटिक में कॉल की वॉल्यूम ज़्यादा हैं. अभी आई थिंक पुट वाला डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम देंगे, फिर उसके बाद ये डेटा भी अपडेट हो जाएगा. 2550 इज़ दी लेवल. तो फर्स्ट अपटिक गॉट सोल्ड, जैसा हम सोच भी रहे थे. अब 25,050 के आसपास मार्केट है. क्या ये यहाँ पे एक लोअर लो लेगा, वो एक देखना होगा. अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गया निफ्टी. एक सेकंड के लिए आया था 25,044, अभी 25,046 के लेवल पे है. बैंक निफ्टी हल्का सा नीचे से रिकवर हुआ है, तो वहाँ पे पोजीशंस उसी के अकॉर्डिंग चल रही हैं. हाउएवर कुछ मेजर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा वहाँ पे कि शॉर्ट साइड पे या लॉन्ग साइड पे कुछ ऐसा मेजर पोजीशन या कुछ ऐसा बना हो. तो 25,041 मार्केट इज़ डूइंग एज वी वर एक्सपेक्टिंग. अब इम्पॉर्टेंट होगा ये देखना कि यहाँ से सेंसेक्स कैसा बिहेव करता है. तो सेंसेक्स इज़ अराउंड द सेम लेवल्स वेयर इट क्लोज्ड येस्टरडे. एक बार देख लेते हैं कि वहाँ पे कंसिडरिंग कि आज एक्सपायरी है, तो वहाँ पे कैसा ऑप्शन चेन का डेटा बन रहा है वो देख लेते हैं. उसके अकॉर्डिंगली देन वी विल डिसाइड. थोड़ा सा ऊपर आता हुआ निफ्टी इन लेवल्स पे अराउंड डे हाई लेवल्स. वी जस्ट 5 minutes इनटू द मार्केट. आई थिंक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों उन्हीं लेवल्स पे हैं. $25,083 इज़ द करंट लेवल. बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर आता होगा. यही जोन है जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट रिजेक्शन ले सकता है 25,082 के आसपास. हाउएवर नेवर से नो इन द मार्केट. मार्केट इज़ नोन टू गिव मूव्स विच नोबडी एक्सपेक्ट्स. तो अभी पुट राइटिंग ज़्यादा है कॉल राइटिंग से, एटलीस्ट इनिशियल लेवल पे. 25,090 इज़ द करंट लेवल ऑन निफ्टी. अगर ये यहाँ पे सस्टेन होगा तो हम अपनी पोजीशंस रिवर्स भी कर देंगे. However, my expectation is that let's say it is going to take some sort of rejection here. If it is not taking rejection, we will be more than happy to change our view from neutral to negative to slightly positive. अगर ऐसा होता है तो above 25,100 levels is where Nifty is.
थोड़ा सा रिट्रेस होता होगा। अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन वही है कि ये यहाँ आएगा, एक विक बना के नीचे जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट यही है। इफ़ आई एम रॉन्ग, आई एम फाइन विद माई व्यू गोइंग रॉन्ग। वहाँ पे मैं पोजीशंस को रिवर्स करना जानता हूँ, तो आई विल बी able to do that. We will wait for another 7 minutes or so before confirmation. 25095 is the current level. Now it will be important to see whether we make a lower low here or a higher high. I think it is in the middle somewhere. 25100 is the current level on Nifty. Sensex on the other hand is around 81930 odd levels. It is 150 points up. We will see where the markets do the best of the business for the day. Call side, the volumes are high. In terms of writing, puts right has been more than the calls. Hence we have seen this 50 point up move on Nifty as well. 25102 is the current level where the market is. If I talk about premiums on Sensex, I think it is pretty much in the same zone where it closed yesterday. तो ना बायर्स ने कुछ बनाया होगा, ना सेलर्स ने कुछ गवाया होगा, ऐसा कुछ सिनेरियो अभी बन रहा है वहाँ पे। 81960 के आसपास है। 25105 का भी करंट लेवल है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट ऑर्डर्स, डू आई सी एनीथिंग? थोड़े से बाई साइड के ऑर्डर्स दिख रहे हैं। दिस इज़ अराउंड 25186 लेवल्स। इसके ऊपर सस्टेन होगा क्या? व्हेन आई से 186, ये फ्यूचर का लेवल है, बिकॉज ट्रेडिंग तो फ्यूचर में ही होती है, स्पॉट ट्रेड नहीं होता है। 25107 इज द करंट लेवल ऑन द निफ्टी। 4 more minutes before we will try to do a flip on our view. $25,108 is the current level. कॉल्स की साइड पे कॉल्स का वॉल्यूम ज़्यादा है। अब कॉल राइटर हट रहे हैं क्या 25100 के? दो इट इज़ वेरी अर्ली टू से इफ़ द कॉल राइटर्स आर फीलिंग द पेन ऑलरेडी और नॉट, बट 25101 is the current level. Will there be a retracement? If it's there, we would be more than happy to continue with the position, provided the candle close remains below our levels. If it does not, then we will flip our positions. 25100 is the current level. Sensex is around 81940 levels. I think it should retrace. This is my expectation. That somewhere here it is going to take a retracement. If I talk about 3 minutes, I think it has already started, though too early to say. 25094 is the current level. If it rejects from these levels, right, it's going to be a very good trade at these levels. However, we will have to see whether the market also obliges or we obliges to the market.
25102 is the current level. Another 2.5 minutes before the 15 minutes candle gets closed. कौन सा सिटी का कौन सा कंट्री का 25101 is the current level. Bank Nifty has also turned into positive. 55 points uptick on on Nifty, 26 points on Bank Nifty. Sensex is like 180 points up. 25102. Another 2 minutes before the 15 minutes trading gets over. Call side volume is on the higher side. Call writing little bit. Put writing is more. 25108. So the positions have been flipped. The view has changed now from negative side to positive side, considering that it has been able to close above. तो अगर आप short side में थे तो I think it is the time that we probably should flip our positions. However, post the flip, the action has been onto the negative side. This is pretty much common to what we have seen yesterday. Let's see if the same happens today or not. $24,092 is the current level.
25180 is the level on Nifty futures. 25092 is the level on Nifty. Let's see, इसने stance change किया, and then it went until 25120, and then it is now retracing a bit. Let's see, though now the stance that we have is on the positive side. Let's see how the market reacts. 25101 is the current level. 25103, I think more than same sort of a view that earlier happened yesterday, wherein the first we had short position. First candle got us into the position, and then eventually we had to flip the positions. But that is how the market is. It is, if it is taking our stop losses, this is how it is. 25092 is the current level. Let's see, Nika is doing well. Nifty is like 40 odd points up. 2589 is the current level. Concord little bit up. Zydus doing well. I think Pharma today is taking the charge, 1% up. IT is doing okay. 1493 is the current level on Infi. 24093 is the current level on Nifty. Sensex 81900 is the current level. So 81900 call is around 175 180. The put is around 120 odd levels. So we will remain with our bias. Put volumes 32 lakh, call volumes 43 lakh. So volumes on the call side are on the higher side. More writing on the put side than the call side. $75,090 is the current level. Okay, so our view is positive. I think the stop loss happens to be around 25040 levels. Nifty retracing now. 25080 is the level currently. Going down even further. $25,078. Little bit of negative price action. Nifty has started to give up the gains that it had. $25,077 is the current level. Sensex around 81,860 odd levels now. 81,800, the call is on the higher side. 81,900, 148. 81,900 put is 128. Let's see if it is able to come up or not. The stance has changed to positive on this candle. The price action was positive. Nifty Bank above 56,000 levels. 24,086 is the current level on Nifty.
Sensex is around 81,800 levels. How is the dollar index doing? Dollar is doing around 88.76, pretty much at the same level where it was. uh, yeah, and I think it is pretty much at 25,090 sort of a level. What do we see into the market prices? So we have seen good orders around 25,190. Let's see if these are the shorts or the longs. The only time can tell. Uh, this is where the biggest volume for the day is 25,190 on the future levels. It is on. It is below those levels for now. 81,900 is the level on Sensex for now. Now Nifty is trying to regain 25,100. Let's see how the option data is. Volumes are on the call side. Call writers little bit going away, put writers continuously increasing. 25,095 is the current level that we have. Bank Nifty is not supporting. Bank Nifty is continuously on the weaker side, it seems. $2,500 at Nifty. So it changed the trend, did some retracement, now around 2,500 levels again. Stance here is on the positive side, so in case if you haven't initiated any positions, do consult your financial advisors. We are into longs. 25,101. Do we see any traction here? So on Sensex, 81,800 has writing, 81,900 put has writing. Sensex is around the same levels of 81,900. 926 is the current level. So on 81,900, the call writing is less, put writing is more. 81,924 is the excess, the exact level to be precise at this point. 25,096,097 is the current level on Nifty. Let's see if it is able to sustain above 25,100. That will be interesting to watch. 940. Let's see if there is a change in the volumes. Okay, so call writing, put writing is more. The volumes have normalized, though it is on call side, which is higher volumes. 25,094 is the current level. Let's see if there's anything that's coming up in significant long. Nope, nothing there. I think it is too early to see. 2580 again on Nifty. Sensex is around 81,873 odd levels. The volumes on the put side is more than the call sides. Sensex is around 81,880 levels. Nifty around 25,082, 83 levels. How's HFCL doing? HFCL. Okay, so HFCL has a gap up. Expectation of mine is that eventually it will be sold off. Let's see.
On Bank Nifty, pretty much same action as what we have seen on Nifty. Nifty is 25087 at current levels. Uh, Sensex is around 81900 levels. So important is that Nifty should sustain above 25100. That is going to be important for Nifty at these levels. 25100 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा ना तो थोड़ा बेटर मूव आने की उम्मीद है, बिकॉज 25100 पे ना राइटिंग बहुत ज़्यादा है. 1,28,00,000 और 25100 की पुट पे भी 1 करोड़ है. तो 25100 पे दोनों कॉल राइटर पुट राइटर काफ़ी हैं. दो एट द मनी स्ट्राइक है तो वो तो एक्सपेक्टेड भी होता है कि यहाँ पे थोड़ा ट्रैक्शन ज़्यादा होगा. बट 25083 इज़ द करंट लेवल वेयर द निफ्टी इज़ ट्रेडिंग. We were talking about 25174, which is where the maximum volume for the day was seen. देखते हैं इसके नीचे जाता है क्या. ट्वेंटी फाइव ज़ीरो सेवन फाइव अब काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस हो रहा है ये. I think again a similar thing is happening. Yesterday as well, the first candle showed the positive price, and then it take the stop loss as well, and then eventually went down. This is what is this is what has been happening until now. The rest, let's see. 25066 is the current level. 25070. Nifty has rejected from 25100 levels. Now at 25060, the entire move almost has been retraced. I don't know what Nifty is up to, but change the trend and then eventually coming back. Till the time it is above this, we will continue with the positive bias. It has to close below 25028 to 25030 levels before we will not change our stance. 25060 is the current level. Sensex 81820. So it is still 50 points up. Bank Nifty has again retraced. Okay guys, so this is what the instance is. We will continue to have the positive bias till the time it is trading above 25028, and then let's say if the market changes the view, we will oblige. Oblige in the sense that will mean that it has created a new low for the day, and then we will flip our positions back. Okay, thank you so much for watching guys. I hope you gained some sort of insight out of this. Thanks. Bye.